Hello बच्चों. So welcome to the lecture. Today we are going to start with straight line. तो आज हम लेक्चर में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद द स्ट्रेट लाइन. So first of all, let us write down the definition of a straight line. So what is the definition of a straight line? So a straight line is nothing but a locus of a point which moves so that it is collinear with two distinct given points. That is, suppose this is my rectangular plane, this is my y-axis, this is for my x-axis. I am given 2 points. मुझे 2 पॉइंट given है. So first point is say P1 which has coordinate say x1 comma y1, and I have another point say P2 which has coordinate say x2 comma y2. Then any point which is collinear with P1 and P2, say point P having coordinate x comma y. It is the locus of all such points P. So what is a straight line? It is the locus of all points P which is collinear with the two distinct given points P1 and P2. तो सभी को क्लियर है ये बात? एंड हमें पता है क्लास 10 से हमने देख रखा है कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सम ऑफ दिस डिस्टेंस, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ P1 P2. सो वी कैन से दैट a straight line is the locus of a point P such that the sum of distances from P with P1 and P1 with P, sorry, it is the locus of the point P such that the sum of the distances of P1 with P2 and P2 with P is always equal to the distance from P1 to P. क्लियर? यानी अगर कोई पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट आपको दे रखे हैं, उस पॉइंट P की डिस्टेंस P1 से निकालो, उस पॉइंट P की डिस्टेंस P2 से निकालो, और उनका सम हमेशा P1 और P की जो डिस्टेंस है उनके सम के इक्वल आए, देन सच अ पॉइंट, द लोकस ऑफ सच अ पॉइंट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन. क्लास 10 पे हम सबने देख रखा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन in the angular plane. A linear equation in two variable means an equation of the type ax plus by plus c is equals to 0. Equation of this type always represents a straight line in the rectangular plane. तो और वो हमने ड्रॉ भी किया है. नाउ अब हम इन चीजों को एल्जेब्राइकली या फिर एल्जेब्राइकली समझेंगे कि क्या रिलेशन होगा इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है दैट इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. तो सबसे पहली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो अब तक आपने नहीं पढ़ी होगी, दैट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो राइट डाउन स्लोप, पहले मैं समझाता हूं फिर आप नोट डाउन कर सकते हो, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. Suppose you are given the rectangular coordinate system and it is the line say L1. So सबसे पहले मैं इन टर्म्स ऑफ tan और एंगल डिफाइन करता हूं. थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यानी अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है, देन द वैल्यू ऑफ tan theta is defined as the slope of the line L1. तो किसी भी लाइन L के लिए
क्या होगा स्लोप उसका? थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन with positive direction of axis, then the value of tan theta is defined as the slope of that straight line. ये थीटा रिप्रेजेंट क्या करेगा? थीटा रिप्रेजेंट क्या करेगा और हमने tan वैल्यू हुई क्यों ली उस थीटा की, वो भी अभी समझने की कोशिश करें। तो देखो रफली कोई भी लाइन जो है वो कितने एंगल से एक्स एक्सिस के साथ झुकी हुई है, थीटा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। tan वैल्यू हुई क्यों ली? क्योंकि tan वैल्यू को, tan थीटा को हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स of any 2 points on this line, and that is we are going to derive the slope of a line, the value of slope of a line in terms of the coordinates of 2 points given on the straight line. ठीक है, तो पहली डेफिनेशन स्लोप ऑफ ए लाइन समझ आई क्या? इट इज द value of tan theta, where theta is the angle made by the line with positive direction of x-axis. Now, let us, we are given any 2 points on the straight line. Say one point is P1 having coordinate x1, y1, and one point is say P2 having coordinate x2, y2. We are given 2 points on the straight lines, that is this line is passing through 2 points. हमें वो 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट से P1 which is x1 y1 and second point is say P2 which is x2 y2. If we want to find the value of this tan theta, how can we evaluate them? Draw a line from P1 parallel to x-axis and draw a line parallel to y-axis through P2, and let these lines intersect at point M. Then clearly this line is parallel to x-axis, so this angle has to be theta again. This angle has to be theta. Now we will see in the triangle P1 M P2 what is the value of tan theta. We will check that what is the value of tan theta in the triangle P1 M P2. How we will find out? We know that the value of tan theta is nothing but the ratio of length of perpendicular and length of base, P by B. So we'll, in this triangle, what is the length of perpendicular? The length of perpendicular is this length. What is the length of base? The length of base is this length. And now to find this length, first we will find this length and subtract this length from it. We find this one and subtract this from the whole, we will get the length of P2M. Now what is this length? This length is nothing but the y coordinate of P2, so this length is y2. Similarly, what is this length? This length is nothing but the y coordinate of P1, so this line is nothing but y1. Similarly, if you want to find this length, तो हम क्या करते हैं, इतना लेंथ निकालते हैं यहां तक और उसमें से ये लेंथ माइनस कर देते हैं. Now you can easily see that this length is nothing but the x coordinate of the point P2, that is x2, and this is nothing but the x coordinate of point P1, so this length is nothing but x2 minus x1. Now what is the value of tan theta? That is the length, that is the ratio of perpendicular to the base. So tan theta in this triangle will be equals to length of perpendicular is nothing but y2 minus y1 divided by length of base is nothing but x2 minus x1. So this tan theta can be easily evaluated using the coordinates of the points which are given on the straight line. तो यानी और ये tan theta ही तो हमने क्या डिफाइन किया, स्लोप ऑफ लाइन. तो इस स्लोप ऑफ लाइन को इजीली हम इवेल्युएट कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं दिस इज अ सिंपल वे कि हम थीटा को जो एंगल का जो
झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ उसको थीटा की बजाय टेन थीटा में अगर मेजर करेंगे तो टेन थीटा इजीली इवेल्युएट किया जा सकता है यूजिंग द coordinates of any 2 points on the line, and hence we are defining tan theta of the angle, tan of the angle made by the line with positive direction of x-axis as the slope of the line. So हमारा जो first formula, दो formulae हमारे यहाँ से direct निकल के आ गए क्या? If the line L1 is making an angle theta with positive direction of x-axis, then the value of slope of that line, which is represented by m, is given as tan theta. First formula to find out the slope of the line. Clear? And the second one is, if the line L1 is passing through 2 points, say x1, y1 and x2, y2, then the value of the slope of this line, which is represented by m, is given as y2 minus y1 upon x2 minus x1. और यहाँ पे आप पहला पॉइंट किसको मानोगे, दूसरा किसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार जिसको पहला मान लिया उसको ही पहला रखना है, क्योंकि अगर तुमने मान लो इस पॉइंट को x1 y1 को दूसरा पॉइंट मान लिया होता, उसको आगे रखते तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन आता, वो कैंसिल आउट हो जाता, वैल्यू सेम आ जाती, तो tan थीटा की वैल्यू सेम आ जाती, एंड दैट मीन the slope of the line is nothing but the tan value of the angle made by that line with positive direction of x-axis. Clear है इतना? Okay, now we will derive the conditions of parallelism and perpendicularism कि कोई दो straight lines आपको given है, and if you want to check whether two lines are parallel or not, अगर उनका slope आपको given है तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो पहले हम डिटरमाइन करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, दैट इज कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइंस टू बी पैरेलल, कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइन to be parallel. Now you can easily see that if two straight lines are parallel, so this is first line and this is the second line, and if the line L1 is making an angle theta 1 with positive direction of x-axis, the line L2 is making an angle of theta 2 with positive direction of x-axis, then these two angles should be equal because they are the corresponding angles for two parallel lines with y-axis. So theta 1 should be equals to theta 2 अगर दो lines parallel हैं तो, or which will implies that tan theta 1 will be equals to tan theta 2 if two lines are parallel, and tan theta is nothing but the slope of that line. That means if I am given m1 is the slope of line L1, m2 is the slope of line L2, then lines L1 and L2 are parallel if and only if m1 is equals to m, and only if L1 L2 are parallel. क्लियर? तो कंडीशन किन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल होने की अगर आपको चेक करनी है using their slopes, then you can easily see that two straight lines are parallel if and only if they have same slope. I hope it is clear. Now we will discuss कि कोई दो straight lines अगर perpendicular हैं तो उनके slopes में क्या relation है. Now we will check what is the condition in terms of slope that two given straight lines are perpendicular to each other. So let they are given a rectangular coordinate system. Say this is the line L1 and
this is the line, say L2, which is perpendicular to given straight line, that is this angle is 90 degree. Let A is the point where the line L2 intersect with x-axis, B is the point where the line L1 intersect with the x-axis, and M is the point where line L1 and L2 are intersecting with each other. Then let θ1 is the angle which L1 made with positive direction of x-axis, and θ2 is the angle which L2 made with the positive direction of x-axis. Then in triangle AMB we can easily see that θ1 is nothing but θ2 plus 90. Then in triangle AMB we can easily see that the angle θ1 is nothing but θ2 plus 90, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, θ2 is equals to θ1 minus 9. क्लियर है? अगर इसी जगह पे हम इस लाइन को फर्स्ट लाइन और इस लाइन को सेकंड लाइन बोलते तो उससे परपेंडिकुलर होने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज उस केस में हम इस एंगल को क्या बोलते, θ1 बोलते, इस एंगल को θ2 बोलते, और उस केस में θ2 की वैल्यू कितनी आती, θ1 प्लस 90 डिग्री. बोलो ये बात समझ आई? अगर मैंने इन लाइंस L1 L2 में इस लाइन को जब मैंने L1 बोला और इसको L2 बोला है तो वो कंडीशन है. अगर मैंने इसको L2 और इसको L1 बोल दिया था तो भी तो वो परपेंडिकुलर रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस केस में θ2 की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाती, ये एंगल θ2 हो जाता, ये θ1 हो जाता, θ2 सिंपली 90 प्लस θ1 आ जाता है ना. तो इन एनी केस हमारा जो एंगल होगा सेकेंड लाइन का θ2 विच इज नथिंग बट या तो θ1 में प्लस 90 करके आएगा या माइनस 90 डिग्री करके आएगा. सो द एंगल which the second line made with positive direction of x-axis in terms of the angle which the first line made with the positive direction x-axis is given by this, that is θ2 is equals to θ1 plus minus 90 degrees. Now let M2 is the slope of line L2 and M1 is the slope of line L1. Then what is the value of L2? Then L2 is M2. What is the value of M2? M2 is nothing but 10 θ2, which is nothing but 10 θ1 plus minus 9. First case, अगर this is प्लस वाला केस है तो ये बनेगा 10 θ1 प्लस 90, क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड, क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड. सो एंगल क्या बन गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये 10 जो है 90 के कारण फोर्थ में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया उस केस में माइनस कोट θ1. सेकेंड केस, अगर ये है θ1 माइनस 90 तो माइनस कॉमन ले दोगे, 90 माइनस θ1 कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जो वो माइनस बाहर आया है कोट के वो एक और माइनस लगा देगा, उस केस में भी ये कितना आ जाएगा, माइनस कोट θ1. तो 10 θ1 प्लस माइनस 90 डिग्री इज नथिंग बट माइनस ऑफ कोट θ1. आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये कर रखा है, और इसको मैं और कुछ नहीं बल्कि माइनस 1/10 θ1 लिख सकता हूं. एंड व्हाट इज 10 θ1? θ1 इज द एंगल दैट लाइन L1 इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो 10 θ1 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन L1 विच इज माइनस M1. सो हमें क्या मिल गया, M2 is equals to minus 1/M1, sorry, minus 1/M1, which implies M1 into M2 is equals to minus 1. So this is the condition for two straight lines to be perpendicular. तो अगर कोई दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है और आपको उन दोनों के स्लोप्स पता है और आपको चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो सिंपली व्हाट डू यू हैव टू चेक, यू जस्ट सिंपली हैव टू चेक कि उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आती है या नहीं. तो कुछ केसेस हैं जो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. जैसे इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, then what is this angle which it is making with positive direction of x axis? It is 90 degree, and 10 90 degree is not defined.
So the slope of line which is parallel to y-axis is not defined. Clear? The slope of the line which is parallel to y-axis is not defined. Clear? तो एक चीज देख लेना, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखी है सॉरी, और उसको परपेंडिकुलर चेक करना है किसी लाइन के, तो सीधी सी बात है कि फिर वो दूसरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, तभी वो परपेंडिकुलर होगी. एंड दैट मींस अगर किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड है और उसको आप चेक करना चाहते हो वो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो स्लोप उसी लाइन का नॉट डिफाइंड है जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और फिर उसको अगर परपेंडिकुलर चेक करना है किसी दूसरी लाइन के, तो वो दूसरी लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट इज if it is a line of the type x is equals to a, then this should be a line of the type y is equals to b, तभी ये पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, ओके. Okay, now we will find one more condition which is collinearity of three given points in terms of slope. That is, I am given a coordinate system. Say this is my x-axis. Sorry, this is my y-axis and this is my x-axis. And suppose I am given 3 points. Say P1. This is say P2. And this is say P3. The coordinates of point P1 are say x1 comma y1. Coordinates of point P2 are say x2 comma y2, and the coordinates of point P3 are say x3 comma y3. So if I have to check whether these 3 points are collinear or not, then you can easily see that these 3 points will lie on a single straight line. So we find the slope of that line using these 2 points, that is y2 minus y1 should upon x2 minus x1, क्योंकि हमने देख लिया कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट्स से पास हो रही है, then the slope of those 2 points should be equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now again we will find the slope of the same line using these 2 points. What will be the slope in this case? This will be y3 minus y2 upon x3 minus x2. Now क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे थे, तो इनका स्लोप सेम होना चाहिए. दैट इज ये कंडीशंस सेम होने चाहिए. यानी कि इफ यू आर गिवन 3 पॉइंट्स एंड यू वांट टू चेक whether these 3 points are collinear or not using the concept of slope, then simply क्या करो, 2 पॉइंट चूज करो और स्लोप निकालो लाइन का. सिमिलरली फिर एक पॉइंट को रिप्लेस कर दो बचे हुए पॉइंट से. मान लो मैंने पॉइंट P2 को रिप्लेस कर दिया इससे, या फिर हो सकता है P1 को रिप्लेस कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक पॉइंट को रिप्लेस कर देना है बचे हुए पॉइंट से, और फिर उससे स्लोप निकालना है उस लाइन का. दोनों के दोनों स्लोप सेम अगर आ रहे हैं तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं. क्लियर है? ओके, तो अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन कंसेप्ट पर बेस्ड, जिसमें से पहला क्वेश्चन यू कैन इजीली सी दैट if the points 5 comma minus 3 8 comma 2 and 0 comma 0 are the vertices of a triangle, then show that the median from A is the perpendicular to side BC. क्या गिवन हमें? 3 पॉइंट्स गिवन है, एक ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. हमें क्या शो करना है? पॉइंट ए से जो साइड BC पर मीडियन है वो साइड BC पर परपेंडिकुलर है. ओके, तो पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं. दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. फर्स्ट पॉइंट इज, तो उसको मैं नाम देता हूं ए. दीज आर द ए बी सी. बिल्कुल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. इट इज गिवन दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ए अगर बनाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट -3, यहाँ पे कहीं पॉइंट ए. पॉइंट बी विल बी 8,2, 8,2 यहाँ पे कहीं. और थर्ड पॉइंट इज सी. दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी which is origin 0,0. Let us join these points. क्या कह रहा है वो?
इस ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट ए से जो बीसी साइड पर मीडियन डाला, याद करो मीडियन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी पॉइंट ए से बीसी का जो मिड पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट डी, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो मीडियन है, वो कह रहा है कि शो करो ये इस पे परपेंडिकुलर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वी नो वेरी वेल इफ आई एम गिवन 2 पॉइंट से x1, y1 एंड x2, y2, then what are the coordinates of midpoint of P1 and P2? Then midpoint of P1 and P2 is given as, क्या होता है बताओ जल्दी से, x1 प्लस x2 by 2 होगा x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 होगा y कोऑर्डिनेट, इज गिवन बाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट जब मुझे निकालने हैं, तो this is my first point, this is my second point. So what will be the coordinates of D? So coordinate of D is equals to, यहाँ पे x1 ले लेता हूँ 0 को, x2 ले लेता हूँ 8 को, तो 0 plus 8 by 2 which is 4, 0 plus 2 by 2 which is 1. So the coordinates of point D are given as 4, 1. आई होप क्लियर है इतना। अब हमें क्या शो करना है, ये जो मीडियन बना एडी, आपने ये जो बना, ये परपेंडिकुलर है बीसी के। इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, पहले स्लोप ऑफ लाइन बीसी निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन बीसी, स्लोप ऑफ बीसी इट इज गिवन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस, सॉरी y2 माइनस y1 2 माइनस 0 upon 8 minus 0 which is 1 by 4. Clear? So the slope of the line BC is 1 by 4. Now we will find out the coordinate of the line AD. Now we will find the coordinate of the line AD, और उसके लिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5, -3. So slope of AD इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से क्या होता है, y2 माइनस y1 1 माइनस -3, 1 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, अब आपने इसको लिया ना, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2. So coordinate, sorry, the slope of the line AD is -4, while the slope of the line BC is 1 by 4. Now, product of slopes of BC is product, that is slope of BC into में slope of AD is equals to nothing but 1 by 4 multiply -4 is equals to -1. और याद करो, कोई दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स की प्रोडक्ट अगर -1 आती है, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. सो द लाइंस AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस तो क्लियर है. Now we will define what are the intercepts of a line, and we will derive various forms of the straight line. So first of all, let us define the intercept of a straight line. So this is your rectangular coordinate system, and say L1 is a straight line. Let us suppose this line is intersecting y-axis at the point say 0, p. This line is intersecting the point, the y-axis at a point say 0, p.
and it is intersecting the x-axis at a point C, A comma C. Then A is called the x-intercept of line L1. This A is called x-intercept of L1. This D is called y-intercept of line L. तो आई होप क्लियर है कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट एक लाइन के क्या हैं. x इंटरसेप्ट क्या होगा? जिस पॉइंट पर लाइन x एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट, एंड सिमिलरली जिस पॉइंट पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन. Suppose you are given the equation of a straight line, then you can easily find x intercept and y intercept. क्यों? क्योंकि अगर आपको x intercept फाइंड आउट करना है तो वो x एक्सिस पे कट कर रहा होगा, x एक्सिस पे कट कर रहा होगा तो y की वैल्यू सिंपली वहां पे 0 पुट कर लो. सिमिलरली y इंटरसेप्ट निकालना है तो y एक्सिस पे कट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो वहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो एंड यू विल इजीली फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन. हियर the portion between the intercepts is called the line intersected between x-axis. That is, if this is a point say B and this is point A, then this portion of line, this AB, is called the line segment intercepted between axes. The line segment intercepted between axes या simply the portion of the line, क्योंकि किसी लाइन का एक पोर्शन इज सिंपली अ लाइन सेगमेंट. इसको हम ये भी बोल सकते हैं पोर्शन ऑफ L1 इंटरसेप्टेड बिटवीन क्लियर है? What is the length of AB? It will be simply a square plus b square का square root using Pythagorean theorem. I hope x intercept और y intercept आपको clear है. Now we will derive various forms of the equation of a straight line. Okay, now we will discuss various forms of a straight line. So इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन की जो डिफरेंट इक्वेशन फॉर्म्स हो सकती हैं वो फाइंड आउट करेंगे, और उनमें सबसे पहली फॉर्म बहुत सिंपल लाइंस के लिए विद द लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y. So let this is your coordinate system and I'm given a straight line the L1 which is parallel to y. Now since L1 is parallel to y axis, let us suppose it is at a distance of b units from y axis. That is, इस लाइन L1 की जो हम डिस्टेंस है from the y axis हम क्या मान लेते हैं, b है, and this b will be positive if this line is towards the right of the y axis, and if this b will be negative if this line is towards the left of the y axis. Now let p be any point on this line having coordinates x comma y. Now draw perpendicular from P to y axis and let this is n. Then what is the length of PM? Length of PM has to be equals to the coordinate of x coordinate of point P, that is equals to x. But we know that because these two straight lines are parallel,
So this length EM has to be equal to B. So this length EM has to be equal to B as the line L1 is parallel to Y. So from here we get X is equals to B will be the coordinate relation for this point P. अब P तो कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया था, यानी कि किसी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है L1 पे किस कंडीशन को सेटिस्फाई करा होगा, उसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू d के इक्वल आ रही होगी, यानी कि द इक्वेशन ऑफ any straight line which is parallel to y axis is given as x is equals to b. Similarly, वो सेकंड मैं नहीं करवा रहा हूँ, you can easily see. Similarly, equation of a line parallel to x-axis is given as y is equals to say a, where a is the distance of the line from x. This a will be positive or negative according to that line lies above the x-axis or that lies below the x. तो आई होप ये दोनों फॉर्म्स क्लियर हैं, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से b टाइप की, वेयर b इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द y एक्सिस. And similarly, if a line is parallel to x axis, then the equation of that line will be of the form y is equals to parallel to x axis, y is equal to a, where a is the distance of the line with x. I hope clear है इतना. Okay, now let us derive the equation of any straight line which is passing through origin. So let L1 is a line which is passing through the origin O. This is your x-axis and this is your y. Let L1 is making an angle theta with positive direction upward. Let L1 making an angle of theta with positive direction of x-axis. Then you can easily see that the slope of this definition, this line M will be equal to 10. And the slope of this line will be equal to tan theta. Now let P having coordinate x, y be any point on this line. Draw a perpendicular from P to x-axis and let this be M. Now the length of PM will be nothing but the y coordinate of point y, which is equal to y, and the length of OM will be nothing but the x coordinate of point P, which is x. So in triangle POM, the value of tan theta will be equal to EM divided by OM, which is nothing but y by x. But we know that tan theta is nothing but the slope of that line, so this will be equals to M. So y by M is equals to y by x, and this implies y is equals to M. This is the equation of any straight line which is passing through the origin. That is, अगर आपको एक straight line given है जिसका slope M है और वो origin से पास हो रही है, तो straight line की जो equation होगी वो होगी y is equals to mx. Is it clear है? Okay, now let us find the equation of a straight line which is passing through a given point and having a given slope. यानी एक straight line की equation हमें find out करनी है जो एक point दे रखा है उससे पास हो रही है और उस line का slope given है. So let this L1 is the line and let slope of L1 is given is equals to say M, and let a point say P1 having coordinate x1 comma y1 is given जहां से वो line pass होती है. Now we have to find the equation of this line. Let us consider any arbitrary point P on the line.
L1 having coordinate x comma y. We have to find just a relation between these x and y coordinates. Now we know that अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी कि स्लोप ऑफ L1 will be equals to this point P और T1 से निकालूंगा तो y2 minus y1 that is y minus y1 upon x2 minus x1 that is x minus x1, but this slope is given to be m, so this has to be equals to m. So y minus y1 is equals to m into x minus x1. This is the required equation of the straight line which is passing through a point say x1 comma y1 and having a slope n. तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका स्लोप आपको गिवन है और आपको एक पॉइंट गिवन है जहां से वो पास हो रही है, तो द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल्स टू y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो आपको गिवन है इनटू इज इक्वल्स टू m, m यानी कि स्लोप इनटू x माइनस x1 यानी कि x माइनस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. तो आई होप क्लियर है. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.